General Pervez Musharaf versus Federation of Pakistan, which is generally known as Musharraf High Treason case. It is a case law in which former Pakistani President and Chief of Army Staff General Pervez Musharaf was charged for high treason when he suspended the Constitution of Pakistan back in 2007 on 3rd November. This case was decided by the Pakistan Special Court on 17 December 2019. Before starting the discussion on the case law, we need to know what is the word high treason. What does the term high treason means? So high treason is basically one of the serious offenses in the history of Pakistan, which is generally attributed as disloyalty towards the state. That means you are no more loyal towards your state. You are no more sincere towards your state. High treason is also explained under Constitution of Pakistan 1973, and provisions of Article 6 deals with the term high treason. So if we look into Article 6, the clause 1 of the article says anyone who abrogates, subverts, suspend or hold in abeyance or anybody who is attempting to perform such act by use of any force or by any unconstitutional means, he will be guilty of offense of high treason. So here the word abrogation, subversion, suspension and hold in abeyance holds different meaning. The word abrogate means to abolish the constitution. That means you are totally terminating the constitution. While the word subversion means to bring a complete downfall. That means destruction of basic essence and morality. While the word suspension means to stop the constitution from being active, either temporarily or permanent, as General Pervez Musharaf did on 3rd November 2007 by temporarily suspending the Constitution of Pakistan. While the fourth word, that is hold in abeyance, means the condition when the constitution is temporarily set aside. When there is a situation of chaos in your country, simply we can say that ऐसी कंडीशन जब कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल एक साइड पर रख दिया जाए, जब मुल्क में अफरा तफरी की सिचुएशन पैदा हो जाए. So, clause 2 of the article 6 says any person who helps other. अगर कोई बंदा किसी दूसरे को कोलैबोरेट करता है, किसी की मदद करता है ये तमाम एक्ट्स परफॉर्म करने में, तो लाइक वाइज ही विल ऑल्सो बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ हाई ट्रीजन एंड विल बी चार्ज फॉर सच ऑफेंस. While the clause 2a of article 6 says that the high treason acts which is mentioned in clause 1 and 2 shall not be validated by any court of Pakistan, whether Supreme Court or High Court. No court will validate such acts. कोई भी कोर्ट ऐसे एक्ट को वैलिडेट नहीं करेगी, वैलिड करार नहीं देगी under article 6 clause 2a. While the third clause of Article 6 says that Majlis-e-Shura, which is the parliament of our country, it shall provide the punishment for the person who is guilty of the offense of high treason. So as our case law is basically related to the proclamation of emergency, so we need to know, is there any clause present in the Constitution of Pakistan which is validating the emergency? So yes, Article 232 of Constitution of Pakistan deals with the proclamation of emergency. Article 232 says that yes, President can proclaim emergency, but there are certain conditions. So we need to know what are that conditions. So प्रेसिडेंट मुल्क में इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है, लेकिन उसको पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असम्बलीज के अप्रूवल की ज़रूरत होगी. वो रेजोल्यूशन पास कराएगा असम्बलीज में भी और पार्लियामेंट में भी. जब पार्लियामेंट के मेंबर्स और असम्बलीज के मेंबर्स अप्रूवल देंगे, देन प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी, अदरवाइज इट कांट. एंड द इमरजेंसी विल नॉट एक्सीड फॉर मोर देन 2 months. इमरजेंसी का जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ 2 months के लिए है. दैट प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी बट विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असम्बलीज. But if there is a situation in the country which is out of control and it can't be handled, so yes, if president thinks that the emergency need to be extended, so for that extension he will also go again to parliament and provincial assemblies and ask for the approval of extension of emergency. If the parliament and provincial assemblies allow, then president can extend the emergency. And the concept
to ask the advice from federal cabinet and prime minister for the proclamation of emergency is totally illegal, it is unconstitutional. अगर हम ये कहें कि एक ऐसा प्रेसिडेंट जो फेडरल कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर मुल्क में इमरजेंसी प्रोक्लेम करता है तो वो बिल्कुल गैर आईनी है, कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को अलाउ नहीं करता, आर्टिकल 232 इस चीज की इजाजत नहीं देता. So now moving towards our main topic, that is the case law of Pervez Musharaf versus Federation of Pakistan. So we all need to know what was the background of that case, from where that case started. So back to 2007 presidential elections, जब परवेज मुशर्रफ ने दोबारा इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए खुद को एज अ कैंडिडेट पेश किया तो जनरल परवेज मुशर्रफ को इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस अगेन. So while after receiving the approval from election commissioner, one of his opponents, who was the retired Supreme Court Justice Wajihuddin Ahmed, he challenged the eligibility of परवेज मुशर्रफ फॉर द कंटेस्टिंग द इलेक्शंस. उन्होंने ये कहा कि क्या मिलिट्री का एक बंदा जो है वो प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड कर सकता है, बिकॉज जनरल परवेज मुशर्रफ वाज होल्डिंग टू पोजीशंस एट अ टाइम, दैट इज he was acting as a president of Pakistan and on the other hand he was also acting as chief of army staff. So इस चीज को चीफ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया. जब सुप्रीम कोर्ट इस केस की हेयरिंग सुन रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दे विल अनाउंस द डिसीजन, बट ड्यू टू द पर्सनल एंगेजमेंट ऑफ वन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दे डिलेड द डिसीजन दैट दे विल अनाउंस ऑन 12 नवंबर. इससे पहले कि कोर्ट किसी फाइनल डिसीजन पर पहुंचती, जनरल परवेज मुशर्रफ, हु वाज एक्टिंग एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ही डिक्लेयर्ड द स्टेट ऑफ इमरजेंसी under Article 232 of Constitution of Pakistan on 3rd November 2007. After declaring emergency, he issued his provincial constitutional order, which is called PCO, which replaced the country's constitution. Musharraf imposed emergency in the country and asked the judges of Supreme Court and High Court to take the oath on such provincial constitutional order, which was issued by the General Pervez Musharraf, President of Pakistan. The judges refused to take oath and President says कि अगर कोई जज इस प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पर ओथ लेने से इनकार करता है तो उसको उसकी पोजीशन से रिमूव कर दिया जाएगा. 100 of judges refused to take oath, including the Chief Justice of Supreme Court, that is इफ्तिखार चौधरी. उन्होंने ओथ लेने से इनकार किया तो प्रेसिडेंट ने उनको उनके ओहदों से रिमूव कर दिया था. आफ्टर दैट 15 दिसंबर 2007 को परवेज मुशर्रफ ने इमरजेंसी खत्म कर दी और अपना प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर वापस ले दिया और मुल्की कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल कर दिया था. तो दैट मीन्स परवेज मुशर्रफ हैज सस्पेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पररी अंडर आर्टिकल 6 क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973. केस को प्रोसीड करते हैं. फर्दर क्या हुआ, 22 जुलाई 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने जनरल परवेज मुशर्रफ को उनके 3 नवंबर 2007 के एक्ट को डिफेंड करने के लिए बुलाया कि जो उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी वो उस एक्ट को आकर डिफेंड करें. तो मुशर्रफ को जब समन किया गया कोर्ट की तरफ से तो मुशर्रफ के लॉयर्स कोर्ट में अपीयर नहीं हुए. 1 अगस्त 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी लगाई थी वो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी. उसके बाद क्या हुआ, केस फर्दर आगे बढ़ा. 2013 हुआ, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई और उन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग नून के एक बंदे दैट इज मौलवी इकबाल हैदर फाइल्ड अ पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सेइंग दैट मुशर्रफ शुड बी ट्राइड for the high treason case when for suspension of constitution on 3rd November 2007. Supreme Court on 5th April 2013 accepted the petition filed by the one of the member of पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून. उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बंदे की जो पिटीशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया और 8 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जनरल परवेज मुशर्रफ नेम शुड बी पुट इन ECL सो दैट ही कुडंट लीव द कंट्री, ताकि वो कंट्री छोड़कर ना जा सके, उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया जाए.
12 दिसंबर 2013 को शरीफ गवर्नमेंट ने 11 पेज पर मुश्तमिल एक कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट में फाइल की, जिसमें मुशर्रफ पर हाई ट्रीजन के 5 चार्जेस लगाए गए थे और उन्होंने ये कहा कि मुशर्रफ का ट्रायल एक स्पेशल कोर्ट में किया जाए, उसके लिए एक अलहदा स्पेशल कोर्ट बनाई जाए। 13 दिसंबर 2013 को स्पेशल कोर्ट जब बनी तो स्पेशल कोर्ट की फर्स्ट मीटिंग हुई, जिसमें मुशर्रफ को समन किया गया, लेकिन मुशर्रफ अपीयर नहीं हुए। 24 दिसंबर 2013 को जब मुशर्रफ कोर्ट में अपीयर होने आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके लिए उन्हें एफआईसी ले जाया गया। तो एफआईसी ने बाद में ये रिपोर्ट सबमिट की कि मुशर्रफ इज सफरिंग फ्रॉम ट्रिपल वेसल कोरोनरी डिजीज। आफ्टर दैट केस फर्दर प्रोसीड हुआ। 18 फरवरी 2014 को मुशर्रफ कोर्ट में अपीयर हुए आफ्टर अवॉइडिंग 22 कंसेक्टिव हियरिंग्स। 22 कंसेक्टिव हियरिंग्स में पेश ना होने के बाद फाइनली मुशर्रफ 18 फरवरी 2014 को कोर्ट में पेश हुए और 21 फरवरी 2014 को जो मुशर्रफ ने कोर्ट में अपील की थी कि उनका ट्रायल जो है वो फौजी अदालत में किया जाए, लेकिन स्पेशल कोर्ट ने यह कहा कि फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ का ट्रायल फौजी अदालत में नहीं होगा। इस चीज को डिसमिस कर दिया गया था, टोटली रिजेक्शन हो गई थी। After that, on 31st March 2014, Musharraf was indicted for the charge of high treason. And in March 2016, Musharraf, through his counsel, through his lawyer, he submitted an application in the Special Court of Pakistan कि उन्हें मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो बैरूने मुल्क जाकर अपना इलाज करवा सकें। 16 मार्च 2016 को अदालत ने मुशर्रफ की ये दरख्वास्त कबूल की और मुशर्रफ का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म दे दिया गया। इसके बाद मुशर्रफ 18 मार्च 2016 को कंट्री छोड़कर चले गए। उसके बाद काफ़ी हियरिंग्स होती रही, मुशर्रफ को बुलाते रहे, मुशर्रफ नहीं आए। उनसे कहा गया कि वो थ्रू स्काइप अपना बयान रिकॉर्ड कराएं, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। 11 मई 2016 को स्पेशल कोर्ट ने मुशर्रफ को एज एन एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया इन दी हाई ट्रीजन केस। उनको मफरूर करार दिया गया कि वो अपने इस केस में अपनी हियरिंग्स में अपीयर नहीं हो रहे। दैट्स वाई कोर्ट डिक्लेयर्ड हिम एज एन एब्सकॉन्डर इन दी हाई ट्रीजन केस। And on 19 November 2019, the special court says that it will announce the decision on 17 December 2019. After that, on 17 December 2019, the special court announced the judgment of General Pervez Musharaf high treason case, in which Musharraf was put to sentence to death under Article 6 of Constitution of Pakistan for suspension of Constitution 1973. केस यहाँ पर नहीं रुका। उसके बाद मुशर्रफ ने इस केस के लिए हाई कोर्ट में अपील की, स्पेशल कोर्ट की इस जजमेंट को चैलेंज करते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने जब हाई कोर्ट में ये अपील की तो 13 जनवरी 2020 को लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि मुशर्रफ ने इमरजेंसी नाफिज की थी 3 नवंबर 2007 को, उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ एब्रोगेशन और सबवरियन का वर्ड मौजूद था। जो होल्ड इन अबेयंस और सस्पेंशन का वर्ड है वो आफ्टर 18 अमेंडमेंट ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन की क्लॉज 1 में। इसलिए मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को जो इमरजेंसी लगाई थी वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है और एक बंदे को पास्ट एक्ट के लिए आफ्टर अमेंडमेंट्स चैलेंज नहीं किया जा सकता। जब वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं थी तो उस वक्त मुशर्रफ ने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं तोड़ा, सो ही शुड नॉट बी चार्ज फॉर हाई ट्रीजन केस। सो द लाहौर हाई कोर्ट annulled the death sentence announced by the special court, and he said that it is totally unconstitutional, and he called that decision null and void. So that was all from my side. I hope you people understood this case. If you have any question, you can put your query. Thank you so much for watching.